Hello everyone, welcome to the CommerceAchiever platform. With today's session, we are continuing our last session which we have covered on the issue of share capital. So we discussed few things. I'm just connecting you with our last session. Okay, issue of shares. So we are going to discuss in both the language, in Hindi and English, so as we can help to all the aspirants. And in the last session, we have covered some things which, and I believe that you people studied this portion in your class 12, but don't worry, we will recall every portion we already have covered. Okay, so let's begin with today's discussion on the issue of shares. So we learned in the last session that in case the company issuing the shares under the consideration for cash, they can issue at the par, at the premium, or at the discount itself. So with today's session, we are going to discuss the portion of issue of shares at par. Okay, with this session, we'll understand the general entry briefly. We'll understand every area which is possible need to recall, which we have already covered in the class 12. Okay, so we can call it as a issue of shares under consideration, issue of shares under consideration for cash. So under cash system, we are going to discuss at par, means issue of shares at par. Issue of shares at par. I know you have a lot of knowledge, but it's important to recapitulate everything. So when the company is decided that they are going to issue the shares at par, that means which is equal to the face value, or we can call it as a nominal value of the shares. So we can call this equal to issue value, means company is issuing the shares. What it means the issue value at which price the company is going to issue the shares is equal to the face value, or say that nominal value of that particular shares of group of shares. Suppose a company is decided to issue the shares for rupees 10, then the face value should also be the rupees 10. So these are the cases when the company issue the shares, and the company may ask for to its shareholders for the payment of shares, which is payable either in one installment or in that means in a single pay or in a multiple installments. Okay, so when we learned that the company issue the shares at par and which is payable in the lump sum, what means company issuing the shares, and I believe you know the meaning of shares. We already discussed in last session. You already know the meaning of share capital. Okay, so company issuing the shares, okay, to its shareholder or to the general public. So what they are getting? They are getting the money. So they are initially receiving the money on the issue of the shares. So bank for that, what will do, we pass the general entry on receipt of application money. On receipt of application money. Some people might wonder how we can first receive the application money even without doing it. So in this case, it can, like a company is coming up in front of the public and they are just issuing the shares, and if you have a keen interest, company don't know who are going to be a shareholder. So once you go towards the company and let them know that you have a keen interest through if they are in IPOs or without an IPOs, and like general session of the investment. So what you have to do, you have to first pay to the company. So now in solving these kind of questions, be the company, don't be the shareholder. Now be the company. Okay, because in this chapter we are going to work as a company. So always think yourself as a company and solve this question. The chances of mistake is negligible. Okay, so what is that you being a shareholder come to me and you want to buy my shares, you want to invest in my company. So what you'll do, did you call me phone and talk to me? No, you just put money, because you know about the company, you put the money. So what, I am the company, I am getting the money, I am getting from the my balance is going to be increased. Which balance? Bank balance. Okay, so that's why we'll do bank account debit. Okay, bank account debit to what we are receiving for the application to share
application account. Okay, so I'm explaining journal entries here, but my request is that while solving the numerical, I'm not going to discuss each and every journal entry. We are just going to discuss about the figures. So that's why while discussing the theory portion, it's very important for you to be keen observer of the theory, because you people think theory is irrelevant, which is wrong. Okay, so in this journal entry that we are receiving the amount from the shareholders, so we are receiving the application money. Here I am the company, you are the shareholder. So while you are solving the question, you will be the company, I will be the shareholder. Okay, so I receive the money, so bank account debit to share application money, and in this we use the amount whatever I receive from you as an application. So amount received on application will be here. So you can just write the narration. Okay, being the application money received on shares of XH. Okay, you can write that. Okay, so in this we what is amount we disclosed here is whatever we received on application. Clear? Okay, next, if we receive the application, now I know that you have interest in my company and you got the application. So now I'll do that transfer that amount I already received to your capital account. I create your capital account. Okay, so now do I for second step I'll do, I give the allotment. Okay, so allotment of shares. Okay, so I'll do the allotment of shares to you. So share application account debit, because I received your application, your money against the application. Now I do the debit, share application to share capital, because you contributed into my company, so now it's become the capital. Hope you're getting. So we have, with the money we received from you as a shareholder, we received the money, okay, on the number of shares I allotted you some there. So now we can call it as an application money which is transferred to the share capital account. I hope these two entries are clear. If you memorized in your history, like in your class 12th, 11th or graduation, stop that. From now, learn and gain every new knowledge and try to execute at the ground level. Okay, so what is the points we need to be taken, that shares may be either in the kind, means in any of the kind, like in equity shares or the preference shares. Okay, so it may be any shares, equity shares or preference shares. So separate share applications account need to be open for each class of shares. Okay, like if you are going to prepare for equity shares, so there should be a separate account. For preference shares, there should be a separate application and likewise accounts. Okay, so separate, because equity shares have a separate rights and preference shareholder have a separate rights. So do not merge them. Most students do that. Separate them. Okay. And until and unless the shares are allotted by the company, the whatever the amount which is me received as an application money will be as an offer. So until and unless I won't accept the amount, I cannot transfer it to the share capital, because how it become a capital until and unless I won't receive it. Okay, so we'll do like that. Okay, sometime it means like you give me a money, means there are, I open up, I have a 10 shares for example, but people are 12. So supply demand are not meeting. So in some cases I have to refund the money. In some cases we'll discuss on the pro rata and all while we do, but I'm now switched on a basic understanding. Then in that case I have to refund to the two people who are extra to me. So that will be the refund of application money. So what will be the entry? Just simple understanding, no ratification. I got the money, bank account is debit to your share application against the share application you gave me. Okay, but now I can't pay you because I have a 10 shares, but you are 12 people. 12 people apply for the applications. For 2 or on the pro rata basis, I have to return. I have to refund it. So, in case if there is a situation of refund, so I am now currently stick to the application. Okay. So, in case of there is a situation of refund, I have to give back the money to you against the share application supposed to be. So I'll give back to you money, share application account debit to bank account. What goes out is credit to the bank account. I hope you learned and you understood. You don't memorize those rules, 3 rules against a nominal account or personal account. Don't do that. Try to understand as a basic knowledge. Okay. So now you are refunding. So when you're giving back, you're taking out from your pocket that amount and give it to you. I'm giving to you because I'm a company or a shareholder. So my bank balance will reduce
and against the what, against the share application money. Okay, so what we have to do, we have to prepare accordingly. So when we issue a shares at par, and there are some situations we get the payment in installments. So the above one was when I receive an lump sum amount. What if I received an installment in installments? So I'll discuss this. First, give me a moment to conclude in the other language. Okay. ओके, सो आज के सेशन में हम हमारा जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जो शेयर्स हैं वो इशू किए हैं कंपनी, हमने यानी मैं यहाँ पे कंपनी हूँ, आप शेयर होल्डर, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप खुद को कंपनी मान करके चलेंगे, जब भी ये क्वेश्चंस करेंगे खुद को कंपनी मान करके चलेंगे। क्लियर? तो अगर आप एक कंपनी है तो आप अपने शेयर्स को अगर कंसिडरेशन ऑफ कैश में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे भी। जब आज की सेशन में हम सिर्फ पार की थिंग्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कंपनी जो है अपने शेयर्स को पार पे इशू कर रही है, ठीक है, तो उसका इशू प्राइस क्या होना चाहिए, उसके फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी बोलेंगे कि हमने कंपनी जो है उसने शेयर को पार पे इशू किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि कंपनी ने जो इशू किया वो 10 रुपए के हिसाब से हुआ, तो उसकी फेस वैल्यू भी क्या हुई, 10 रुपए से हुई, नॉमिनल वैल्यू क्या हुई, 10 रुपए से हुई, ठीक है। तो कंपनी जो है दो तरीके से पेमेंट कलेक्ट कर सकती है, एक तो लमसम यानी एक संग पैसे दे दो, ठीक है, या कई बार मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में, पार्ट टाइम पेमेंट्स में और जो है मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स फिक्स करती है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं जब हम लमसम में अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लमसम, ठीक है। सो लमसम, राइट, अभी आपको विजिबल होगा क्लियर। तो जब हम लमसम में अमाउंट मिले, तो अभी क्या है, मुझे नहीं पता आप मेरी कंपनी में इंटरेस्ट हो, मैं आपको नहीं जानती, करोड़ों की जनसंख्या है, पब्लिक है, लार्ज है, आपने कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया, तो आप क्या करोगे, शेयर बाय करने के लिए पहले पैसे दोगे, आपने पैसे दिए तो मैंने पैसे ले लिए। अब मैं कंपनी हूँ, मैंने कहा आप कंपनी मान करके ये क्वेश्चन करो, तो मेरे पास क्या आया, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, किसके अगेंस्ट आया, आपने अप्लाई किया है इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में आप दे सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स ऑफ XYZ रुपीज ईच, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी हमने अमाउंट आपसे रिसीव की है उसकी जनरल एंट्री कर दी। क्लियर है? कुछ भी याद नहीं करेंगे, अगर आपने क्लास 11 12 बीकॉम में आपके टीचर्स ने उसे याद कराया ना, प्लीज़ इसको वहीं पे छोड़ के आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जुड़े हैं तो आपने अच्छी नॉलेज लेनी है। उसके बाद आपने हमें पैसे दे दिए, अब हमें आपको शेयर होल्डर बना देना है, क्योंकि मुझे पता चल गया आपका मेरी कंपनी में इंटरेस्ट है। तो आपने जो एप्लीकेशन के पैसे दिए थे वो मेरे लिए अब क्या हो गया, मैं यानी कंपनी कैपिटल हो गया, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन को अब मैंने रिसीव कर लिया है और अब मैंने उसको कैपिटल अपना मान लिया, तो मैं उसे ट्रांसफ़र करूंगी, यानी आप जिसको अपनी लैंग्वेज में बोलते थे कि भाई अलॉटमेंट कर देना है शेयर्स का, या एप्लीकेशन मनी ड्यू करनी है, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्लियर है। इसमें जो भी हमने रिसीव किया उतने हिसाब से आपको नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और कोई भी चीज़ याद नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि 10 लोग हैं, मेरे पास 10 शेयर्स ही थे लेकिन 12 लोग आ जाते हैं लेने के लिए, और 12 लोग ने एप्लीकेशन फिल कर ली है। आपने ना आजकल बहुत IPO के नाम सुने होंगे कि इतने लोगों ने अप्लाई किया, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ सुना होगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ छोटे से नंबर्स में कि 10 मेरे पास शेयर्स थे लेकिन लेने आ गए 12 लोग, तो मैं 12 लोग को तो 10 शेयर नहीं दूंगी, तो मैं क्या करूँगी, या तो प्रोराटा बेसिस पे दूंगी, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं अभी, तो हम प्रोराटा की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम आगे करेंगे। तो हमने 2 लोग को वापस करना है पैसे, कि नहीं भैया हमारे पास 10 की जगह हम 10 को रखेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या जनरल एंट्री, मेरे पास जब पैसे आए थे, मैं कौन, कंपनी, तो बैंक अकाउंट में मैंने पैसे डाले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन अब मुझे देने पड़ रहे हैं, मुझे 2 लोग में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट पैसे वापस कर दिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेटिस्फाइड हो रहे हो, रटना नहीं कुछ भी, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर मुझे वापस करना पड़ रहा है। हमारे पास क्वेश्चन में दोनों तरीके के शेयर्स की डिस्कशन हो सकती है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो। अगर हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की एप्लीकेशन आती है, तो दोनों की एप्लीकेशन को हमें सेपरेटली ओपन करना होगा, ठीक है। हर क्लास को हमें डिफरेंट डीलिंग करनी होगी सबका, क्योंकि आप प्रैक्टिकली समझो, कुछ याद नहीं करना है यार। इक्विटी के राइट्स हैं, सब कुछ अलग है, प्रेफरेंस के राइट्स और सब कुछ अलग है, तो डेफिनेटली डिफरेंट अकाउंट ओपन करोगे ना, तो सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, ठीक है।
तो आपने अगर कभी सिचुएशन आई तो आपने रिफंड किया तो रिफंड की एंट्री आपकी ऐसी हो गई, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जब हमने लमसम में पैसे लिए थे। अब हम सिचुएशन को डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट में। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट par and amount is payable in installment. Amount is payable in installment. Please give me a moment. Okay, there's some issue. Okay, fine. So in case when the shares are issued at par and amount is payable in installment, so there is a situation when the shareholder is not payable in the lump sum or in a single installment, and they are interested in n number of installments. So after allotment, when someone filled the application, so after the allotment has been made by the company, so whenever the need arises, point to be noted, whenever there is a need arises, the director of the company may further call for the installments from the shareholder towards the payment of that value against the shares they show the interest or they subscribed for it. Okay, so whatever the directors ask them to pay for the installments, such demands are called as calls. Okay, so we learn one new word, calls. Okay, why? Because they are different calls, okay, that are distinguished on the basis of their numbers, like first call, second call, third call, and whatever be the last call, say third call and final call, fourth call and final call, which one is the last call is called as a final call. Okay, so the last installment is also termed as a final call along with the number, so there was a question in interview. So it was very great. It is very basics, but students are not well aware about it. There was a question in interview, why we called the last installment call as a final call. So you have to explain and connect the dots, because examiners don't needed any hi-fi knowledge from you. They're checking your basics. They don't need any hi-fi, your professional degrees or your and anything else. They need you as a basics to take care of the citizens. So think like that. Okay, so in that case, what we do, we have a shares which is payable on the n number of installments. So after the allotment, there can be, whenever the need arises, the director asks the shareholders that if you have, as you have a subscribe for the value of shares, they may require to make the further installments, and these installments are further called as these demands will be further called as calls, and they are given a numbers as 1, 2, 3, 4 accordingly, and the last one to make the complete value is called as a final call. Okay, so it may be the first installment we called as an application money. So we'll discuss the installment, a brief about, because I know you people know everything, but I want you to recapitulate everything what you have learned so far. Okay, so installment, the first installment is called application money. So I'm writing first, you will gather that it's all about the installments. So it is an application money. Application money. Okay, second installment, I'm writing just second, and for the installment is the heading, that will be your allotment money. Allotment money. Now next is further depends on number of calls which the organization is keen to demand. That means a director keen to raise it. It may be, say your third installment will be your first call. First call. Your fourth may be your second call, and it's on depend. Whatever be the last one we call. Suppose third one is the last call, so third and final call. Hope you gather this information. Clear? Third and final call. Is that clear? Should we proceed towards the journal entries? Okay. So if there is a theoretical question in the exam, what you can do is to explain the terms into the little bit paragraphs, explain that you can collect in the one installment or in the number of installments, explain through the diagrams, because if you do this diagram, it will not counting in your word limits, and explain the journal entries, explain if there is a procedure of refund. You can do, it's all about your writing. Okay. So general. So first what, again, I don't know who are you. I'm a company, you are a shareholder, you are a general public, I don't know. So you show me the interest and you give me the money for the application. So me, because this is my books, so I am getting the money. So bank account debit to share application against what? Against the application. Nothing to do the ratification that nominal account mein kya tha, personal account mein. No, don't do that. Try to understand the transactions and events. That's it. In the accounts, try to understand that.
Okay, so on receipt of application money, so whatever the amount I am receiving, I and the company, whatever amount I am receiving, I am getting, my pocket is going to fill, I'm going into my bank account and keep it there. The bank account will be raised. So bank account debit to, against what? Against share application. Do not memorize it, please. Okay, so first I'm not writing any narrations. I'm just helping you to recall what you learned so far and revise that. Okay, hope you're satisfied. So bank account debit to share application, and now you people know that why the word is application here, so do not do any memorization. Okay, so now you can put a narration, that being a share application money received in respect of shares. Okay, itna rupiya. So on receipt of an application money, the total amount you received on, so what is the amount? I'm writing the amount. One second please. What is the amount we will write here? Total amount received on application, remember that. Okay, because when we do the numerical, you're going to understand every bit of there, but my request, please understand this session, because most of them think that they know everything, but they don't know everything. Now I received the money and now I came to know you are my shareholder, and I got the application, and now this will be capital for me what? I'm the company, so this is my application money, is my capital, it's going to be my capital. Hope you recall the word shares and share capital I discussed in last session. Okay, so this will be my capital, so I'll transfer it to the capital account and create you as my shareholder. Okay, so this is this procedure, that no, okay, I know that you are my shareholder. This procedure is called, now I'm going to allot you the share. Now I'm going to allot the share. So after receiving the application money, okay, so I means a company, on behalf of company, I'm the board of directors, proceed to allot you the shares. Clear? Okay, so what I do, think, I receive money for application, and now for application I make you the share capital, a shareholder, and transfer your money to the share capital. Clear? Nothing to memorize. So share application account debit to share capital account. Hope you satisfy with this entry. Okay, so with the amount of application, whatever the amount we'll mention there. Okay, so you can make a narration that being the application money on allotted shares not transferred to the share capital, it is a transfer of your money to the share capital account. Do not do memorize. I hope you people see, okay, this was his credit, now make it debit and cancel cross, we get bank account. Don't do that. Do not memorize. Understand the transaction, because I know you people can do. You can understand the transaction. So you can, amount is application amount, right? Application. Because why I'm writing application amount is because sometime when you go on the very difficulty level, sometime you receive 2-3 amount together, or sometime some extra amount in a case you receive. So you don't need to mention that extra amount here. You have to mention only the application amount, and rest you have to carry forward further on the installment. Okay, we'll discuss when the times come. I'm just giving you a brief outline here. So now I allotted the share to share application account debit to share capital. Okay, so what if I again the situation, what if I have only 10 shares space and 12 people will come to me, I have to give them refund. I have to give them refund. So there might be a situation of refund. I'm writing separately. If any, there is a situation of, there is no hard and fast rule. So if any, there is a situation that application money need to be rejected or refunded back, obviously my bank balance is going down, so I have to give my money back to you the shareholder, and I am the company. So bank is going out by bank, and you apply for share application, no more the application. So share application account debit to bank account. Please satisfy it and don't try to memorize it. Clear? So actually whatever the amount you are giving them back or you are repaying them, transfer it. So being an application money or shares is refunded. Clear? Any doubt? No, I hope so. No. Okay, amount is refund amount only. Refund amount only.
Okay, hope you're satisfied with this. Okay, so now everything is done with the application. Now I know you are my shareholder, and now whenever the company, on behalf of company, I am the board of directors, I am the director, whenever money I need it, okay, I called you to pay that money. Okay, so first installment we already done is about the application I received. Now I'll call you for the allotment money. Okay, so allotment in the it is a second installment because the company need, because of some of the meetings requirement, whatever, for the working capital or anything, I need a money. So what I do, I called you. Okay, so in this case what I'll do the due. Okay, so sometime people, what they will do together, they make the payment, okay, along with the application. So sometime in question you find share allotment, application and allotment go hand in hand, so don't confuse there, not to worry. And sometimes it's separately. So if there is a separately, the company asked you as a board of director, okay, now I needed this amount, rupees 2 per share or rupees say 3 per share, whatever be the allotted to the allotment. So I know I'm going to call you and ask you for the payments, so first I will due that entry. Okay, the second installment, that is allotment money due. So while I'm doing, I know I'm going to collect for the share allotment. So third one is share allotment. Hope you are getting satisfied and not memorizing anything. It's my humble request. Okay, try to understand. To share capital, satisfied. Why share capital? Because it's against my capital. For me it is going to be capital. Okay, so whatever amount due on allotment will be shown here. Okay, so you can write an addition that being an allotment money is due in respect of allotment of X number of shares of rupees 10 each, or 2 each, 3 each, whatever be the amount. Clear? Okay, now I, the board of director or director on behalf of the company, ask you that I need a money, and this is the second installment I raised, and now you are going to pay me, the company, receiving the money against what? Allotment. Clear? Against what? Allotment. I'm hoping you are understanding everything. So bank account debit to share allotment account. I hope you are satisfied. Okay, so whatever the amount actually we received against the allotment will be shown in this entry, and narration you can pass that being the amount received on like allotment on X shares of rupees X each, whatever be the 1, 2, 3 or whatever be the amount. Okay, and similarly if I need a third installment, a company, on behalf of company, I'm the board of director, I need a third installment to run the company, I call you again. That means I due the entry again. Okay, for first call, on making the first call. So due my first call, but actually it is a third installment I'm going to ask you. So obviously again I'll make the due entry, share first call account debit against share capital. I know you all people learned in your class 11, 12. If not, do let me know. So share capital account. Okay, I hope now you realize why I'm putting the capital account. So with the amount I asked you to pay for the first call as a third installment, and you can write the narration as being the amount due on first call of X share of rupees X each. Clear? And now you come and pay to me. I receive the money and keep it in the bank account. Bank account debit to share first call account. Okay, because it's related to the first account of whatever amount I received. So suppose is this first call or third installment was the last, so we will write first and final call. Suppose there is a second call, third call, fourth call, that will go accordingly. The third call or a fourth call, it can be n number as per the company's requirement. Hope you are satisfied. This is all about the theoretical understanding of journal entries in case of installment. And please, whatever you learned in the class 11, 12 or in graduation so far, keep it there. Try to understanding. I know, and I'm very, very strongly believe that I know you people have learned in the past, but with today's session you are going to get a true knowledge. So if yes, do let me know, and because if you people give me the review, now I'll try to work more on you for you. Okay, so let it be a two-way communication. Good. Okay, so please give me a moment to conclude in the other language. Okay.
ओके तो हमने समझा कि भाई एक इंस्टॉलमेंट में हमें तो कई बार पैसे ले लिए, अब हमने डिसाइड किया कि हमें मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेने हैं। हमने यानी हम कंपनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने डिसाइड किया कि हम लमसम में पैसे लेंगे, तो ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है, ठीक है। अब अलॉटमेंट करना है, ठीक है। तो अब क्या है, मैं यानी कंपनी के बिहाफ में मैं कौन, डायरेक्टर, ठीक है। मुझे जब जब भी आगे पैसों की जरूरत होगी ना, तो मैं क्या करूंगी, आप जैसे शेयर होल्डर जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनको मैंने एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर ली थी, उनको आगे चल के जब जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं एक इंस्टॉलमेंट मंगाऊंगी आपसे, ठीक है। और आपने वो पेमेंट कर लेनी है, ठीक है। तो फर्दर जब मैं इंस्टॉलमेंट्स कहलाऊंगी आपसे कौन, आप मेरे लिए कौन होगा, शेयर होल्डर, कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, जो आपने सब्सक्राइब किए थे उसके प्रति आपने पे करना है, ठीक है। तो जब मैं डिमांड कर रही हूँ ना, जब जब डिमांड करूंगी उसको क्या बोलेंगे, कॉल्स, क्या बोलेंगे, कॉल्स बोलेंगे, ठीक है। और हर बार डिफरेंट जो कॉल्स होंगी उनके डिफरेंट सीरियल नंबर होते हैं, फर्स्ट कॉल हो गई, सेकंड कॉल हो गई, थर्ड कॉल हो गई, और जो भी आखिरी हुई, डिपेंड कंपनी का कितना जो है उसने इंस्टॉलमेंट डिसाइड किया है, जो भी आखिरी हुई, सपोज करो थर्ड वाली आखिरी हुई तो थर्ड एंड फाइनल कॉल, सपोज फोर्थ वाली आखिरी हुई तो फोर्थ एंड फाइनल कॉल, कई बार फर्स्ट वाली भी आखिरी होती है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ हम नेम टैग लगा देते हैं फाइनल कॉल नंबर ऑफ के हिसाब से, क्लियर। तो हमारी मैंने एग्जांपल लिया कि जो इंस्टॉलमेंट है, पहली है एप्लीकेशन मनी की, क्यों भाई, हमें तो नहीं पता आप शेयर होल्डर बनना चाहते हो, आपने पैसे लगा दिए, तो एप्लीकेशन आपकी आ गई मेरे पास, उसके बाद मेरे को अलॉट करना है, आपको शेयर होल्डर बनाना है अपना, तो मैंने आपको अलॉटमेंट दी, फिर मैंने आपसे जब जब पैसे जरूरत मांगी मैं मांगती रही, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड एंड गो ऑन, जितनी इंस्टॉलमेंट्स की फिक्सेशन थी, ठीक है। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। अब हम चलते जर्नल एंट्रीज की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने कंपनी में पैसे लगाया, मैं कंपनी क्या हुआ, पैसे आए, बैंक अकाउंट में डाल दिए, पैसे बढ़ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे बढ़ गए, किसके अगेंस्ट में, ऐसी किसी के भी नहीं, आपने अप्लाई किया शेयर एप्लीकेशन, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन के प्रति अमाउंट मैंने रिसीव किया वो टोटल अमाउंट आएगा, नरेशन हो जाएगा, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी शेयर से जितने अमाउंट के थे, क्लियर। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी याद नहीं करना, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुछ याद मत करना, हर चीज़ को समझना। अब मैंने तो आपसे पैसे ले लिए, अपने बैंक अकाउंट में भी डाल दी, अब आप मेरे कौन हो गए, शेयर होल्डर। क्यों आए थे, एप्लीकेशन आपने दी थी ना, अब वो एप्लीकेशन के प्रति अब हम क्या कर लेंगे, अपनी कैपिटल बना लेंगे, वो सारे पैसे मेरे लिए कैपिटल हो गए, और आप मेरे लिए क्या हो गए, बहुत ही कीमती इंसान, आप मेरे शेयर होल्डर हो गए। तो शेयर एप्लीकेशन के प्रति हमने उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने पैसे जो मुझे दिए ना वो मेरे लिए यानी कंपनी के लिए वो कैपिटल हो गई उसकी। अब क्लियर। अगर शेयर कैपिटल की मीनिंग क्लियर नहीं है ना, प्लीज लास्ट सेशन में फिर से रिवाइज कर लेना, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको आपकी कैपिटल क्रिएट कर लिया, अब आप मेरे लिए बहुत ही कीमती व्यक्ति हो गए हैं, ऐसे कोई नहीं हो गए। तो आपकी एप्लीकेशन मनी जो भी अलॉटमेंट में थी उसे मैंने यहाँ पे दिखा देना है, और नरेशन आप दे सकते हैं यहाँ पे, बीइंग दी एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स ट्रांसफर टू दी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट, कई बार ऐसे होते हैं ना, वही मेरे पास 10 शेयर है, आने वाले 12 लोग हैं, या तो मैं प्रो राटा दूं या 2 को हटा दूं। अभी हम प्रो राटा की बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं, तो बेसिक के लिए डिस्कस करते हैं। मेरे पास 10 है तो मैं 10 ही को तो बैठा पाऊंगी, 2 को वापस भेजना है, बैंक अकाउंट से पैसे लिए और उनको वापस कर दिए, वापस किए तो बैंक थे क्या गया, पैसे बाहर चले गए, किसके प्रति दिए थे उन्होंने, ऐसे ही मन किया दे दिए, नहीं एप्लीकेशन के लिए दिए थे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिफंड का जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है कि आप चीज़ों को समझेंगे, ट्रांजेक्शन्स को समझेंगे, ठीक है। ये मत देखा करिए बचपन में जो पर्सनल नॉमिनल और वो सब अकाउंट, नहीं वो उसको छोड़ाइए वहीं पे, ठीक है। आपने ट्रांजेक्शन्स को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप मेरे शेयर होल्डर हो गए, मैं कौन, कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर खड़ा हूँ, आज मुझे पैसों की जरूरत है और मैंने आपसे पहली इंस्टॉलमेंट मांगने का सोचा है एप्लीकेशन के बाद। तो अब मुझे पता है कि मुझे आपसे मांगना है, पता है ना, क्योंकि मैं कंपनी हूँ और मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं मांगूंगी, तो मेरे को पता है, तो पहले मैं क्या कर दूंगी, ड्यू करूंगी। बहुत सारे बच्चे रटते थे ना, एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है और अलॉटमेंट में पहले ड्यू होता है, फिर कॉल्स में ड्यू होता है, रटना नहीं है। क्यों पहले वहां रिसीव और क्यों यहाँ पे पहले ड्यू हो रहा है, ये आज मैं समझा रही हूँ आपको। अब आपको पता है आप कंपनी है कि आपको पैसों की जरूरत है, और आपने शेयर होल्डर से अपने भाई 400 शेयर्स लिए तो उसके 3 रुपए के हिसाब से दे देना जो अलॉटमेंट की अमाउंट थी। तो पहले मैं बुक्स में ड्यू कर दूंगी, ड्यू करूंगी तो क्या बनेगा, अलॉटमेंट के प्रति मैं कैपिटल के प्रति अमाउंट को खड़े कर दूंगी, और जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे आप मुझे पैसे दोगे तो मैं उसे बैंक में
डेबिट भी क्रेडिट भी कर दूंगी, ठीक है। सो आप किसके प्रति हुआ, शेयर अलॉटमेंट के, और क्या हो जाएगा वो अमाउंट, हमारे लिए कैपिटल होगी, मेरे लिए कंपनी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी आपकी अलॉटमेंट में ड्यू हुई है अमाउंट वही यहाँ पे दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपने मुझे पेमेंट दे दिया, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पेमेंट, मैंने बैंक अकाउंट में रखे और मेरी बैंक बैलेंस बढ़ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और किसके प्रति, ऐसी मन हुआ दे दी, नहीं, शेयर अलॉटमेंट के प्रति दिया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। अब कभी याद नहीं करना कि क्रेडिट में शेयर अलॉटमेंट था, क्रेडिट में शेयर, मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है, डोंट डू दैट। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो। फिर उसके बाद मेरे को फिर कुछ समय बाद जरूरत पड़ी, मैंने फिर से इंस्टॉलमेंट मांगी, तो मुझे तो पता है कि मुझे जरूरत है और मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, तो पहले क्या कर दूंगी, ड्यू की एंट्री पास कर दूंगी। तो ड्यू की एंट्री पास की मैंने फर्स्ट कॉल की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि भाई वो मेरी कल को कैपिटल हो जाएगी, ठीक है, जो भी अमाउंट फर्स्ट कॉल की ड्यू होगी वो इस अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। और आप पैसे दे दोगे, मुझे पैसे मिल लेना अच्छे लगते हैं, बैंक अकाउंट में डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके प्रति, मन हुआ किसी के प्रति भी नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल के प्रति। क्लियर। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ऐसे जितनी भी कॉल्स होंगी उतनी कॉल्स पढ़ती जाएंगी, जो भी फाइनल कॉल होगी, सपोज सेकंड कॉल फाइनल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल होगी, फर्स्ट ही फाइनल थी तो फर्स्ट एंड फाइनल होगी, अगर थर्ड होती है तो थर्ड एंड फाइनल, ऐसे आपने नंबर्स के साथ एंड फाइनल लग जाएगा, जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। आई बिलीव कि आज के सेशन में कुछ तो वैल्यू एडिशन मैंने करवाया होगा। अगर आपको लगता है ना, आप रिव्यू दें, बिकॉज आपके रिव्यू से मैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस ला दूँ कि मैं आपको कम से कम समय में मैक्सिमम सपोर्ट कैसे कर पाऊँ, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड विद टुडेज सेशन, एंड इफ यू डू रियली like it and if something is their value additions, I request you give your reviews. Let it be a two-way communication. So see you in the next session, more on issue of shares. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.